आज आम डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द कॉमन पीपुल। गणतंत्र अर्थ हूँ लोक मानकर क्षमता। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्राटोस। डेमोस मीन्स द कॉमन पीपुल एंड क्राटोस मीन्स पावर और स्ट्रेंथ। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी and indirect democracy or representative democracy. According to Selle, democracy is a government in which everyone has a share. This means democracy is a government in which every person participates. What is direct democracy? Democracy is of two types, that is direct democracy and indirect democracy. Direct democracy involves the concept of exercise of state power directly by the people. प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क देशर शासन कार्य परिचालना और आईन प्रणयन में अंशग्रहण करती। इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर और रियल डेमोक्रेसी सिंस द पीपुल ऑफ द कंट्री आर इन्वॉल्व्ड इन द concept of exercise of state power directly. It is also known as pure or real democracy. Modern devices of direct democracy are referendum, initiative, recall, plebiscite, etc. Direct democracy has been successfully in operation in Switzerland. Due to the vast population and large volume of the country, it is now impossible to implement direct democracy. So most of the countries are enjoying indirect democracy. Now direct democracy has been successfully in operation in Switzerland. What is indirect democracy? Democracy is divided into two types, that is direct democracy and indirect democracy. It is a form of democracy in which the country is ruled indirectly by the elected representatives of the people. परोक्ष गणतंत्र रे देश जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा परोक्ष भाव में शासित हुए. It is otherwise known as representative democracy. Since the rule of the country depends on the representative elected by the people, it is also known as representative democracy. It is the democracy of modern time. Nowadays, most of the countries are enjoying indirect democracy. So it is the democracy of modern time. What is referendum? It is a device of direct democracy. Literally, the term referendum means referred to. It is a device whereby the public opinion or verdict can be ascertained by a direct reference to the people. It is of two types, that is compulsory referendum and optional referendum. What is initiative? Initiative is the second modern device of direct democracy. It is a positive device by which the people have the right to initiate measures for legislation. If the majority of the people approves the bill, it becomes a law. On the other hand, if the majority of the people disapproves it, the bill gets rejected. जदि संख्याधिक लोक द्वारा यह गृहीत हुए तो बिल टी कार्यकारी हुए. जदि संख्याधिक लोक द्वारा बिल टी गृहीत हुए नहीं ताले यह स्थगित रुहे बा रिजेक्टेड हुए. व्हाट इज रिकॉल? रिकॉल इज द थर्ड पॉपुलर डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Where recall prevails, the voters have the right to call back any elected officer or representative who fails to carry out his or her duties faithfully. जदि निर्वाचित प्रतिनिधि माने सेमानकर स्वाभाविक कर्तव्य पालन बा प्रतिश्रुति पूरण रे अवहेला करती ताहले जनसाधारण चाहिए सेमानकर स्वाभाविक कार्यकाल पूरण पूर्व मध्य सेमानकु बहिष्कार करी नूतन प्रतिनिधि मानकु नियुक्ति दे परिबे. एहाकु रिकॉल कहा जाय. इट मीन्स टू रिकॉल देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन. यार अर्थ होची सेमानकर प्रतिनिधि मानकु मने पकाई दबा उचित जे सेमाने जनसाधारणकर हित पई कार्य करिबा उचित. Plebiscite is the fourth important device of direct democracy. The term plebiscite is of French origin and it means an appeal to the suffrage of the people. It is the device for knowing public opinion on any issue or problem or policy. It is used for any kind of popular vote on an issue. Then, rule of law. It is one of the features of direct democracy. This means he may be a citizen or citizen's representative, but everyone is under law. Rule of law अर्थ होची आईन लो शासन, अर्थात आईन समस्तक ऊपर से साधारण जनता हुंतु बा शासक वर्ग
आईन आगे समस्ते समान। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। देशर समस्त नागरिक आईन आगे समान। द लॉ इज सुप्रीम डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द रूल। द लॉ इज सुप्रीम डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द रूल ऑफ लॉ नॉट द रूल ऑफ रूलर्स। गणतांत्रिक प्रक्रिया होची आईन शासन, किंतु यह शासक मानकर शासन नुहे, कारण आईन समस्त ऊपर। आईन अवमानना दंड निमंत्रण करे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब लाइक माय चैनल। आउ गोटे वीडियो पर मुझे नोट्स सब डिस्क्रिप्शन ले अपलोड करी, तुम मैंने लिंक द्वारा नोट्स पाई। थैंक यू।